Good evening. So CSAT आम एबे सॉल्व करिया. CSAT रो मोस्टली इंग्लिश सॉल्व करिया. जी जो CSAT क्वेश्चन आसला रिलेटिवली इजी थिला, राइट? जेएस अपेक्षा चलो CSAT करिया. पाखापाखि 33 टा क्वेश्चन आसला CSAT रो आमे गोटे गोटे करी सॉल्व करिया, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 to 6 we are discussing about set A. There are 33 questions and let's start with the passage. What is this passage saying? Passage is about what? All right. Okay, so first question is asking how to, according to the passage, why did Perrier de Fermat not provide the proof for his proposition in his copy of arithmetic? Answer for this question, what? Yes, C. Answer is okay. There is C. Why C? Margin of the page was insufficient to write it down. Here it is explicitly mentioned that I have truly marvelous proof of this proposition, which is margin is too narrow to content. So this is explicitly mentioned. So answer is C for this question. Moving on to the next question. Next question is asking which of the following best describes the timeline of which of the following best describes the timeline of Fermat's last theorem compared to his other conjecture? The answer for this question, what is the answer for this? It was neither the first nor the last he proposed, but it was final to be resolved. So it is also mentioned explicitly in the passage. If you look through the passage, okay, where it is mentioned. So answer is it was neither first nor the last he proposed, but it was the final one to be resolved. So it is about the last one to be proven. The theorem was not the last, not the last that Fermat conjectured, but the last to be proven. Okay. All right. So answer for this question is question number 5. The passage draws a contrast between the Pythagorean theorems and Fermat's propositions. What is the primary basis of this contrast? So primary basis of this contrast is Pythagorean theorems here. The one is easily proven with multiple methods, while the other required advanced technique. Because here it is saying that Pythagoras theorem has infinite solutions and hundreds of proofs. So it is easier to what? This easily proven, while this Fermat is required advanced technique. The method which is provided by Andis will. So answer for this question is C. Okay. Moving on to the next question. The next question is asking the based on the text, what can be the inferred about the mathematical community's progress between 1937 and 1995. So if you go through the passage, the answer here it is saying that I have truly mastered marvelous proof of this proposition, which is margin is narrow to content. However, no correct proof was found for 370 years until it was finally proven using deep methods by Andrew. So mostly the answer for mathematical focused on Fermat's last theorem of 175 years. Moving on to the next question. Now this answer for this question is it's saying x is faster than y, then y is faster than z. Obviously this statement is correct, right? I think we are missing the statement. Then x will always finish before z. It is correct. This statement is correct, and this is also correct. Transitive holds in comparative relations of speed. So answer for this question is A. Moving on to the next question. Match the column paradox ones with column 2. So these are question about paradox, actually different paradox. This is talking about Geno's paradox, Lair paradox, Russell paradox, and Satory's paradox. Geno's paradox
will matching up with Achilles can never overtake tortoise infinite divisibility. Then liar paradox would be the statement is false because liar paradox talks about false, like I am telling lies. So whenever a liar says that, when it becomes true, so it becomes a paradox. So talking about this statement is false, self-referential contradictions. Now Russell's paradox would match up with 3 and Scottish paradox with 2. So answer for this question is A. Question number 19. Question number 19 saying, as again it is asking for the matching list. Now semantic barrier. What is the semantic barrier? Physical barrier. Now you can compare physical barrier with what? A loud generator, because a physical barrier means a generator is a physical barrier, right? Psychological barrier, what? An officer using highly technical legal jargons while explaining the scheme to a rural farmers. This is schematic. Talks about word, technical, legal jargons, word, vocabulary, right? Then what is psychological barrier? Obviously it has to do with psychology. For example, hierarchical response, no. Citizen unable to explain the issue extreme fear of authority. This is psychology. Psychosis, fear, phobia. Then organizational barrier. Organizational barrier, this is hierarchy. So answer for this question is physical barrier, it's I. Hold a minute. Physical barrier is I. Answer is 1. I'm sorry. Answer for this question. A. A is the answer for this. Moving on to the next question. Empathetic listening primarily requires the listener to what? Empathetic listening. Look, here it's saying that feel exactly the same level of emotion. No, this is not right. Correct. Understand the speaker's cognitive and emotional perspectives and reflect that understanding back without immediate judgment. So this is the most probable answer, right? So out of all these 3 answers, this is the most probable answer. The answer for this question is B. Now moving on to the next question. In the fundamental process of communication, what is the primary function of the feedback? Feedback, you know that what is feedback actually? What we give, our opinion regarding any process. Now in this case, the feedback is to allow the sender to determine if the message has been accurately received and decoded by the receiver. So in a communication channels, feedback means whether the message has successfully been delivered to the receiver. If you are getting the feedback from the receiver, then the communication becomes successful. Feedback in that case is C. Answer for this question is C. Now you are the head of the tenders evaluation committee. The company that submitted the lowest, most cost-effective bid is owned by Fast Cousins, which is the most ethically sounded. Now this is related to ethics, decision making. Answer for this question is officially declare a conflict of interest, because you should actually first declare a conflict of interest in this case. The most appropriate decision, solution for this question is C. The most appropriate answer for the questions. Just it is about a decision. Right. So moving on to the next question. Read the passage below and answer the question. Your response should be based on the passage only. What is the passage is about? The passage is about the leader of the disabled right movement. They adopted many of their policy goals from the moment local, state, or national statutes prohibiting discrimination on the basis of handicapping condition. Frequently borrowed language from laws concerning racial, religious, gender discrimination. Existing anti-discrimination statutes were amended to add disability as a category. First major attempt to protect the disabled people from bias occurred in 1970 when the Representative Charles Vanik and Senator Herbert Humphrey proposed to amend the Civil Rights Act of 1964 to include handicapping conditions. The bills were defeated in the committee partly because of the opposition from the supporters of black rights, civil rights, who feared that attention and resources would be diverted from their cause. So going through the question, let's go through the question. According to the passage, what was the primary method used to create early legal protections for the people with disabilities, adopting and amending the language that existing
the anti. It is clearly mentioned in the passage prohibiting where it is a language from laws concerning racial, religious, borrowed, simply borrowed. Okay, descriptions. Okay, this is the answer. You can get the answer from this line only. Answer is B for this question. Okay, next question. Why did the 1972 proposal by Vanik and Humphrey fails to pass the committee? Some of the rights supporters feared that it would dilute the resources for their own cause. Here it is mentioned partly because the opposition from the supporters of black civil rights who feared the attention and resources be diverted from the cause, from their cause. So the answer for this question is option C. Now moving on to the next question. Next question is asking which of the following movements is not mentioned as a source of legal language for the disabled rights statutes. Okay, now this is the answer, age discriminations movement, because here in this passage it is clearly mentioned about what? Let's see. This is mentioned about discriminations relating to racial, religious, and gender. There is no mentioning of age, so answer for this question is D. Moving on to the next question. Which of the following is the most effective initial interpretation strategy while communicating with an emotionally agitated individual? So when you are encountering with an emotionally agitated individuals, your course of action should be to using active listening and acknowledging their emotional states without immediate judgments. Out of all these three options, this is the most probable answer, because if you are going through this, remaining option, then you will find they are really different. I mean, they are not addressing to the demand of the question. So, option B is the answer for this question. Now, going to the next question, consider the following elements of the communications: tone of voice, pitch of volumes, rate of speech, and the specific vocabulary used in the official memo. Which of the above constitute paralanguage? So, what is a paralanguage? It is a non-verbal cue, non-verbal, which accompany with a speech, verbal cue, right? So, paralanguage mostly talk about non-verbal cue and talks about all these three. It doesn't talk about the specific vocabulary because it is the verbal or written word, verbal or written word. Okay, so this cannot be the answer. So if you are eliminating this answer, so you are arriving at 1, 2, 3 is the answer for this question. Moving on to the next question. Which of the following describes the sunk cost fallacy? Sunk cost fallacy in the administrative decision making. Sunk cost fallacy talks about continuing to pour public funds into a heavily falling infrastructure project simply because millions have already spent on it. So without just understanding, without going through the decision process, all you have to do is to pouring in a lot of money which other people have already done it. So this is about sunk cost fallacy, right? Answer for this is B. Moving on to the next. Assertion is intuitive decision making is entirely random guessing and has no place in public administration. Look, here in this options, it is saying it entirely random, right? Entirely random because it is an extreme word. Again, it's not an entirely random word, not an entirely random word. In fact, it is an internalized knowledge. Internalized knowledge. Okay, in fact, it is an internalized knowledge. Okay, so this assertion is wrong. Now, region intuitions often draws upon decision makers' subconscious processing of deep, accurately past experience and pattern recognition, especially useful in crisis situations. In fact, correct. The answer for this question is B. So both no. Answer for this question is A is false, R is true. D. Next questions. Now this is again a passage. This passage is about acquiring enough fission material. This passage is about uranium and fission material, right? So let's go through the passage. Acquiring enough fission materials for a critical mass is challenging. U235 exists in every very tiny amounts in nature. It has to be separated from a much more common isotope of uraniums, U238, and concentrated, enriched,
and processed into a quantity large enough to make a nuclear weapon. Natural uranium is about 0.7% U-235. Uranium that contains 20% or more U-235 is known as highly enriched uranium, and weapons grade uranium usually contains at least 90% of this isotope. Uranium enriched for use in most civil nuclear reactors is enriched between 3 to 20%, low enriched uranium or LEU. The amount of high enriched uranium needed to make a nuclear fission weapon depends on the enrichment level of high enriched uranium and the sophistication of the weapon. So according to the text, what is the standard concentration of U-235? It is already mentioned in this paragraph. Here it is saying 0.27%. The answer is C. Okay, okay, to the next questions. Uranium that has been enriched to level between 3 to called low grade uraniums. It is mentioned, clearly mentioned in this grade is 0 to between 3 to 20%. We go to the next question. Now, why is acquisition of enough materials for critical mass described as challenging? Because the U-235 must be isolated from the far more prevalent U-238 isotope and concentrate. That's why it becomes challenging. Okay, now moving to the next question. Consider the following statement regarding the grapevine. Okay, grapevine in the organizational communication. What is a grapevine? Grapevine, what is a grapevine actually? It is an informal communication, not formal. Formal communication. So informal communication. Since it is saying it is a formal, so that's why this statements become wrong. Okay. So while it often spreads rumors, which is true, it is a rapid informal network, informal networks that can accurately indicate the true level of employee anxiety or morale. Right. So answer for this question is B. Is the answer for this. Now moving on to the next question. Next question is saying statement. A conclusion based in a non-representative sample commits the fallacy of hasty generalizations. Hasty generalization means, what is hasty generalization? It is actually arriving at a decision without taking into account every aspect of the process, right? You need to take into account every aspect of the process before arriving at a decision. But in hasty generalizations, you don't take into account, nuanced details or nuanced aspect of the discussions. So let's conclusion based in non-representative, which is true actually. This is true. Explanation is using a biased. Often your decision become biased when you are, when you are not taking into account minor details. Too small samples to draw universal conclusion. So you are arriving at a universal conclusions without, based on a very small samples. Invalid because of the sample doesn't reflect the diversity. So both are correct actually. The answer for this question is A. Now, an escalations of commitment occurs when an administration charges his or her decision immediately upon receiving negative feedback. Okay, escalation of commitment occurs. No, actually the answer, this statement is wrong because it doesn't change actually. Here it's saying the administration changes his decision. No, in fact they continue to make the same mistake and continue to do the action without changing their decision. So these statements become wrong. Okay. So when it's saying the changes discussion, in fact they continue with their same process without changing their discussion. Heuristics are mental shortcuts, rules of thumbs that actually tells and make quick decisions. So though they can sometimes lead to biases, which is also correct, right? So answer for this question is statement 1 is wrong. Okay, statement 1 is wrong, incorrect, and who is correct? So answer for this question is B. Sorry, D. D is the answer for this question. Moving on to the next question. Scenario. An internal audit is in your department flags the potential irregularities and inflated billings the annual procurement of office electronics. What will be your immediate and logical course of action? Obviously, if you have done so many decision making case studies in ethics paper, it will come natural to you to solve this question. For these questions, obviously you are going to form an personal inquiry committee to investigate the claim, okay, thoroughly while ensuring the written work continues without
disruptions. This is the suitable answer for this question. In fact, the answer for this question. Moving on to the next question. During a performance review, a superior rates a junior clerk high in all performance categories simply because the clerk is excessively punctual. This is so this cognitive bias in interpersonal perception is known as halo effect. This phenomena is known as halo effect because an impression of a particular person's actually what cloud your judgment, right? Whenever a particular perceptions about an individual overcomes or clouds judgment. That is called positive halo. So you end up taking a decision which you would not take otherwise, right? Because of your perception towards a particular individual. That's called halo effect. The answer for this question is D. Moving on to the next question, it is asking for a mass list. The first match is decision under certainty, okay? Decision under risk, decision under uncertainty. So decision under uncertainty is talking about uncertain means the decision makers has absolutely no idea about the probabilities of alternative outcomes. So answer C goes with 1. Okay. So answer for this question, decision under risk. What is the decision under risk? Talks about the decision maker can estimate, yes, can estimate the probabilities of various outcomes based on historical data, right? And decision under uncertainty is about the decision has no idea. Decision under certainty is that decision maker knows the exact outcomes. So for this question, the answer would be what? For I, for what? 2, the risk. Yet no. For 3, C1 and A 2. The answer for this question is D, not A. Okay. A is not the answer for this. Answer for this question is D. Okay. We go to the next question. Scenario: you have been given a fixed welfare budget. You can either fund a high-tech medical. This question is actually asking about this principle. In ethics, you study about what? Jeremy Anthem. Jeremy. Okay, talks about principle of utilitarianism. Principle of utilitarianism. It talks about maximum gain for the maximum number of people. Basically, this question is asking about that option only. So, what you are going to do in this case? You have given a case study. You are being asked as to what kind of decision you are going to take in this. Now, the most suitable option for this question, is greatest good for the greatest number. Okay, the most suitable answer for this. Found the answer honest drive because it provides the greatest good for the greatest number of people. Answer for this question is B. Option B is the answer for this. Going to the next question. The question given below, a proposition is followed by 4 choices. Match the proposition with one of the choices that seems the most justified or applicable. To pass any competitive exams, one must work hard. Now, this is what is the most applicable, most justified, answer. Without hard work, one doesn't pass the competitive exam. This is the most suitable option for the question. Now, next question is asking which of the following describes the confirmation bias. So, in decision making, there is a confirmation bias in public and management. You will study about a confirmation bias. What does confirmation bias says? The tendency to search for, interpret, and favor information that confirms one's pre-existing beliefs while ignoring a contradictory data. So basically, you'll arrive at biased decision makings if you have a confirmation bias. It consists in administration and management.
Next questions, assertion. A circular arrangement of it. No, this is not coming under English. I'll leave this question because this question will be discussed by our reasoning faculty. Moving on to the next question. A person who always lies cannot make a true statement in circumstances. If someone always lies, look, this question assertion is wrong because saying that in any circumstance, right? If suppose, for example, a liar, a person who always lies, if say that I lie, so I am lying, okay. If somebody says I am lying, so in fact, if a liar says I am lying, that becomes truth, right? Truth. If a liar says I am lying, that becomes truth. So this assertion becomes wrong. This person who always lies cannot make it truth. Obviously, making a truth statement. Yes, it becomes a truth. If he's saying that he is lying, if a liar says he is lying, it becomes truth statement. So it is wrong. Okay, this becomes a true statement. Now, if someone always lies, his or her statements about lies would itself be a false, creating a paradox, which is correct actually. So for this question, the answer is A is false and R is true. Okay, option D is the answer for this question. Question number 79. Sympathy in communication involves understanding someone else's cognitive perspective while maintaining professional objectivity. Statement 4 is actually, it is reverse. In sympathy, you only actually listen to others' concerns from a distance, right? You never try to understand, never try to put yourself in his shoe. But in case of empathy, you do that. Actually. You try to get through the cognitive, cognitive understanding of other people, right? You try to put yourself in their shoes and try to understand their issue. So actually, both of them are reversed. For empathy, this communication, cognitive perspective, you develop a cognitive perspective about other. In empathy, sympathy, you only actually, feeling. I mean, you involves in a feeling of pity and sorrow for someone else's misfortune, right? From a distance, you can only feel the sorrow or pity, right? In fact, both of the statements are correct. The answer for this question is B. Okay. Now, next questions. Practical administration officers often make satisfying rather than perfectly optimal ones. This is because the bounded rationality. Because the what? Is saying that bounded rationality, because bounded rationality occurs when there is a limited time in and human cognitive limits. So in that case, you cannot arrive at a perfect optimal decision. Okay. So because of bounded rationality, which talks about what? Limited times. Because if you are an administrator, if you have limited times and what come to information and human cognitive limits, then you will not be arrived at a very optimal solution. So due to bounded rationality, you only arrive at what? Satisfying decision. Okay. So answer for this question is A. Both A and R are correct. Okay. All right. This is the last question for the passage. Easy astla comparatively GS. English passage easy astla. Pakapaki 32 na 33 question astla. Easy thila. Kisi problem nahi. Okay. Thank you for attending this. गुड इवनिंग एवरीवन आज जो आमर सिविल सर्विस जो क्वेश्चन अच्छी सीसैट पेपर आपंकर एप्टीट्यूड सेशन बहुत इजी अच्छी पे आमर एगुड़ा सब क्वेश्चन डिस्कसन होता क्लास रे देखो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन होता क्लास रे क्लासरूम पिला निहाती भाव करेंगे कारण 129 पेज को हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स इज यूज्ड नंबरिंग द बुक हैविंग 129 पेज अच्छा 1 डिजिट नंबर केतना अछि ना 9 टा कूड को जाए ना 1 to 9 जाए
वन डिजिट नंबर अच्छी आपंकर केतेटा ना 9टा अच्छी 1 to 9टा आपंकर 2 डिजिट नंबर अच्छी 90टा तने 19 to 2 केतेटा डिजिट है ना 180 आपंकर एटा 1 डिजिट वाला 9टा अच्छी 9 3 डिजिट नंबर को आरमला ना 100 गोटे निजे नंबर आ 129 तमें 100 ठारू 129 पर्यंत आपंकर 30टा नंबर 13 to 3 is equal to केते हला ना 90 आको एडिशन कले 9 plus 0 plus 0 is equal to 9 18 9 हला 27 ता आपण मानकर आंसर केते हला ना 279 हला 279 how many total number of digits is used in numbering the book having 129 page clear चलो तो next question की जवा question number 2 what price should an antique shop mark on an antique piece which cost 1260 rupees पिला माने आपण मानकर एठी कॉस्ट प्राइस केते अछि ना 1260 रुपीस ठीक अछि प्रॉफिट परसेंटेज देखंतु केते अछि टू गेन 12% प्रॉफिट हला आपनकर 12% प्रॉफिट परसेंट हला 12% डिस्काउंट केते हला ना 16% क्वेश्चन पचारछि हम कोन ना मार्क प्राइस पचारछि क्वेश्चन कोन पचारछि मार्क प्राइस हला एठी कॉस्ट प्राइस केते अछि ना 1260 रुपीस प्रॉफिट परसेंटेज केते अछि ना 12% और डिस्काउंट परसेंटेज केते अछि 16% तो निश्चित भाव में आमे मु कहबी जे कॉस्ट प्राइस कोडी जबा सेलिंग प्राइस देन सेलिंग प्राइस कोडी जबा मार्क प्राइस तले आपण देखो कॉस्ट प्राइस एठी केते नबा ना 1260 देई छै हमकु एठी 12% प्रॉफिट करबा सेलिंग प्राइस केते बना 112 बा 100 12% प्रॉफिट माने कोन ना कॉस्ट प्राइस जेते बेले 100 सेलिंग प्राइस केते होबा ना 112 मोर कोडा दरकार ना सेलिंग प्राइस दरकार इनटू 112 बा 100 16% पिला डिस्काउंट दीजी मार्क प्राइस पचारी इनटू कोन लिखिबी ना 100 बाय 16% डिस्काउंट मीन्स एटा 80 क्लियर आकु 7 ए काटले केता होना 16 कारण 16 7 जा 112 आकु 7 ए काटले एटा 12 100 100 कटि गेला आकु 12 काटले 12 1 जा 105 ता माने एटा 1680 केम दी 16 1680 ऑप्शन के पिला ना डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके क्लियर चलो पिला नेक्स्ट नंबर को जीवा देखन the table below shows the annual expenditure of a manufacturing company over annual the table below shows the annual expenditure of a manufacturing company under various heads of 4 financial years study the table and answer the questions company annually expenditures पिला माने एठी देइछि एटा डीआई टा ए प्रकार क्वेश्चन हमरो ए लास्ट जो हमरो प्रीवियस वीक में डिस्कशन करछे पचार which expenditure had showed the highest percentage increase from 20 to 23 आपण मान देखो एठी केते अछि 42 अछि केबे ना 19 माने 2020 2023 रे केते अछि ना 58 42 ରୁ 58 केते अधिक ना 8 minus 2 is equal to 6 5 minus 4 is equal to 1 ओके आपण मानकर 42 ठारू 58 केते अधिक अछि ना 16 अधिक अछि काहा ठारू अधिक अछि ना 42 ठारू अधिक अछि केते परसेंट अधिक अछि ना इनटू 100 पिला माने आकु हम शॉर्टकट करिया गले आकु काट देला हम कोन ना 4 रे काटले 4 2 रे काटले एटा 8 2 रे काटले एटा आपन केते हो ना 21 केते हो ना 8 by 21 into 100 आकु जदि अप्रोक्सीमेशन हम यूज करबा 8 5 जा केते हो 40% बिलो 40% केबे ना एटा आपन सैलरी सरी गला ऑप्शन देखि दन तबरा सला रॉ मटेरियल केते अछि 65 एटा केते अछि 91 केते अधिका ना 11 minus 5 is equal to केते अधिका ना 6 then 8 minus 6 is equal to 2 26 by केते लिखवा ना 65 तो 13 2 जा 13 5 जा into 100 2 by 5 into 100 माने एटा हला 40% 5 रे काटले एटा 20 हां 22 जा 40% तापर पिला कोन आसला ना मार्केटिंग देखंतु 12 अछि एठी 22 अछि केते अधिका ना 10 अधिका काहाटर अधिका ना 12 ठार अधिका into 100 12 8 जा 96 then 40 12 3 जा 8.33 जदि खाली ना माने हमें अप्रोक्सीमेशन नबा एटा 80% कोडा ना मार्केटिंग आउ रहला आपनकर ओवरहेड देखंतु एठी केते अछि 23 एठी केते अछि 30 केते अधिका एठी ना 7 by 23 into 100 25 जा देनी ना अप्रोक्सीमेटली नबा 7 5 जा 35% बिलो 35% अब ताने 80% कहार अधिक अछि ना आपनकर मार्केटिंग अछि तो आंसर कोन होबा एठी मार्केटिंग 7 आंसर केते हला ना सी हला
Clear? Next number chalandu. Question number 8. What is the ratio of total R&D expenditure to total marketing expenditure over all 4 years? कौन कौन पचारि ना हमर पचारि R&D रो expenditure और marketing expenditure रेशियो टा केते R&D रो expenditure केते देखंतु 93 marketing expenditure देखंतु 63 तमाने 93:67 marketing केते ला अपन R&D केते ला ना 93 ओके देन आपन गुरु पचारला कोन एठी ना जो मार्केटिंग टा केते ना 67 93:67 ता कटिवार ही नाही तो से रेशियो डाला 93:67 चलो तो नेक्स्ट नंबर को जेबा क्वेश्चन नंबर 9 read the following informations and answer the questions there are 70 male and female teachers पिला माने एठी 70 जण अछंदी मेल प्लस फीमेल केते अछंदी ना 70 जण अछंदी मेल प्लस फीमेल ता भीतर पचारि छी female teachers employed in a school of whom 30 teachers are female अच्छा पिला माने 70 जदी 30 जण फीमेल हेले कहले देखि मेल केते हबो 70 जदी 70 जण अछंदी मेल फीमेल टीचर बा 70 अछंदी टीचर जदी फीमेल हैला 30 मेल केते हबो 40 मेल हैला आपनकर एडी केते ना 40 एटा हैला फीमेल हैला आपनकर 30 मेल हैला 40 ता भीतर से कहि छी जे 30 टीचर्स आर मैरिड 30 जण मैरिज करछन्ती 30 जण पिला मैरिज करछन्ती माने निश्चित भाव गोटे पुओ गोटे झील मैरिज कर 15टा मेल 15टा फीमेल 15टा फीमेल ही एठी मैरिज करछन्ती 15 फीमेल एठी मैरिड ओके क्वेश्चन पचार छी कोन ना हाउ मेनी अनमैरिड फीमेल टीचर्स टोटल फीमेल है 30 ता भीतर 15 कोन गले ना मैरिज कले आउ 15 टा पिला कोन हो अनमैरिड तो आंसर एठी कोन हो ना ऑप्शन ए 13 आंसर केते हला ना ए हला चलंतु पिला नेक्स्ट नंबर को जिबा in a group of 100 students केते स्टूडेंट्स अछंती ना 100 स्टूडेंट्स अछन ता भीतर 60 स्टडी मैथमेटिक्स देखंतु येला मैथमेटिक्स येला आपनकर फिजिक्स ओके 60 जण मैथमेटिक्स पढांती एटाला 60 ये सर्कल टा होची पिला आपन मानकर केते ना 60 ये सर्कल टा होची मैथमेटिक्स रो केते हला एटा ठीक 30 स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स फिजिक्स ये सर्कल टा हला आपनकर कोन ना फिजिक्स आदर केते अछंती ना 50 30 स्टूडेंट्स बोथ द सब्जेक्ट्स एटी केता लिखि 30 स्टूडेंट कारण ए जो बोथ बा कॉमन एरिया टा डाला 30 या ए सर्कल टा जदी पिलाला 60 एटा दी 30 एला एटा केता हो 30 ये सर्कल डाला आपनकर 50 एटा दी 30 एटा ला आपनकर 20 ठीक अछि एटा सु कोन ना मैथ और फिजिक्स रे एटा पास ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स नाइदर सब्जेक्ट्स अच्छा आपण मान देखंदु एटी 30 30 केते 60 20 80 जनकर कोन सब्जेक्ट अछि यदि 100 पिला अछंदी ता भीतर कोनोसी सब्जेक्ट नथिया पिला केते ना 20 पिला अछंदी 100 ओनली मैथमेटिक्स 30 ओनली फिजिक्स 20 बोथ मैथ एंड फिजिक्स 30 आकु ऐड कले केते हला 30 + 30 + 20 आपनकर केते हला एठी ना 80 पिला सब्जेक्ट नै छंदी 100 रु 80% नै छंदी ना 20% नै ना प्रोबेबिलिटी हो कोन ना 20 हला ननवा पिला टोटल पिला केते हला ना 100 20/100 जे केते हो आपनकर 1/5 क्लियर चलो पिला नेक्स्ट नंबर ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर पिला माने एठी देखंतु एठू बॉल टा एठी आसीला एटाला 80 मीटर आपन जमा मैथमेटिक्स रे सॉल्व करबिनी सब जा क्वेश्चन आपन जेमती एज यूजुअल हिसाब करी कर परिबे एठू बॉल पड़ला एठी आसीला 80 मीटर एंड रिबाउंड्स टू हाफ आर हाफ रिबाउंड कला रिबाउंड माने हाफ रिबाउंड कला माने एटाला 40 एठू ए पर्यंत एटाला आपनकर 80 एटाला केते ना 40 एठू पुन तळगु आसीला ए भी हला 40 देन आर हाफ गला केते गला ना 20 इठु पुन तळको आसला केते ना 20 देन आर हाफ गला केते आमु पचारची कोन ना से पचारची ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर rebounds to half the height after each bounce what will be the total distance after 3 bounce first number 1 bounce number 2 bounce then एडाला आपन कर कोन ना थर्ड बाउंस आगो ऐड कले केते हो ना 80 + 40 + 40 + 20 + 20 ये सब जगह ऐड कर दवा 80 40 120 by 80 + 20 हला 100 40 40 हला एटा 80 + 20 100 देन एटा हला केते आपन कर 20 आंसर एटी केते आसिला 220 meters 220 meters गोटे मिनिट पिला देखन फर्स्ट आसिला फर्स्ट बाउंस रेट हला 80 देन आर हाफ उठिला 40 देन पुनी रिटर्न आसिला 40
देन एठी गला केते ना 20 पुणी आसला केते ना 20 पुणी आपनकर गला केते एठी 10 ओके 80 मीटर प्लस 40 मीटर 120 मीटर 120 प्लस 40 120 प्लस 40 160 160 प्लस 20 180 okay then 20 180 plus 20 it is 200 then it is 20 then wait a minute. The ball is dropped from a height of 80 meter. It rebounds to half 40 meter. Then it is 40 meter. Then it is 20. Then it is 20. Then it is 10. Then it is 10. Then it. So that 80, 40, 40, then 20, then 20, then 10. 80 plus 20, 100, 100, 200 plus 20, 220. Option A is the correct answer. Next number. A back lends a sum of 1500 rupees, partly 3% and partly 5% per annum. Partly 3%. देखिए दोनों, एटा मिक्सर एलिगेशन कर दवा. किछि पार्ट 3% जो लगी छि, आउ किछि पार्ट 5% लगी छि. टोटल प्रिंसिपल पिला देखंतु केते. टोटल प्रिंसिपल एठी केते ना 1500. टोटल प्रिंसिपल एठी केते ना 1500. A bank lends a sum of 1500 rupees, partly at 3%, then partly at एठी केते ला आपनकर 5%. 5% per annum simple interest to a person. Total interest received after 3 years 180. पिला माने 3 वर्ष रे सबु जाक टंकार अर्थात मूल प्रिंसिपल 1500 टंकार इंटरेस्ट हला केते आपनकर 180. वर्षु को इंटरेस्ट केते हला ना 60. ये 60 रुपीस टा कहार इंटरेस्ट ना आपनकर 1500 इंटरेस्ट. त माने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum केते हो ओवरऑल ना 60 बाय 1500 into 100. त आपनकर कटि गला एटा हला आपनकर 4. 5 minus 4 is equal to it 1. 4 minus 3 is 1. Ratio is 1:1. Ratio is 1:1. चलो तो पिला नेक्स्ट नंबर को जीवा. बढ़िया क्वेश्चन पिला माने एटा बहुत इजी क्वेश्चन. 1 factorial 1 2 factorial केते होबा ना 2 3 factorial केते होबा ना 3 factorial बोले पिला आपनकर एंती 3 into 2 into 1 एटा केते हला ना 6. 4 factorial सेमती कोन होबो ना 4 into 3 into 2 into 1. 4 factorial एटी कोन होबो ना 4 into 3 into 2 into 1. 4 3 जा 12 2 जा 24 24. सेमती 5 factorial केते होबा ना 120. पिला माने देखंतु आडू को सब 12 रा मल्टीपल आसी गला. ए टोटल एंटायर नंबर टा हमर कहा द्वारा डिविजिबल हो 12 द्वारा डिविजिबल. त माने 24 टा 12 द्वारा डिविजिबल 120 टा 12 द्वारा डिविजिबल. आडू को जो नंबर गुडा आसीयो सब संख्या गुडा का आपनकर 12 द्वारा डिविजिबल होबा कथा हो. यही जो संख्याटा रहिला एटा तो मिसे दबा हमें 6 plus 2 8 plus 1 9 9 टा कोन हे जिवो ना हमर रहि जिवो रिमाइंडर. कारण आडू को जते संख्या सब रहिले 12 द्वारा डिविजिबल होबो. ए जो नंबर रहि गला एटा डिविजिबल होबो नाही. एटा आपन मानकर डिविजिबिलिटी अनुसार रिमाइंडर होबो. ओके क्लियर. चलो तो नेक्स्ट नंबर को जिवा. The speed of a boat in still water is 11 km per hour. देखंतु the speed of a boat in still water is 11 km per hour. It can go 12 km upstream and return downstream to the original point in 2 hours. 2 hours and 45 minutes. अच्छा पिला माने एटी बोट रो स्टील वाटर रे बोट रो स्पीड केता दिला ना 11. रिवर स्पीड हमु बाहर करिया कोइछि मन करला x. डाउनस्ट्रीम तो आपन मानको जणा थिबो. डाउनस्ट्रीम माने कोन ना बोट रो स्पीड प्लस रिवर रो स्पीड. त माने आपन कर एठिला 11 plus x. अपस्ट्रीम एठी कोन हबो ना 11 minus x. ताले एबे देखन हमर केत किलोमीटर जीवो ना 12 किलोमीटर जीवो. 12 किलोमीटर डाउन माने आपन कर डाउनस्ट्रीम नियंतु 11 plus x plus 12 divided by upstream नेले कोन आसीबो 11 minus x is equal to 2 hours 45 minutes. 2 whole 45 by 60. 15 3 जा 15 4 जा 4 2 जा 8 plus 3 केते हला ठी 11 by 4. 11 by 4. अच्छा सर मैडम मते टी कोंदु कोन ना ठी आमे जमा इक्वेशन करबानी. मु सबले पिला को पढा जे इक्वेशन करा नाही. कारण आपण एडाला माने एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी कहले चले बा मेंटल एबिलिटी एटा. तो आपण एठी कोन करबे ना बुद्धि टी खर्च कर देबे. देखिए को ऑप्शन टा काम करूची हला. देखो 12 divided by 11 plus 2 13 हबो. 12 divided by 11 minus 2 केता 9 हबो. पिला माने के भाव कर जो 13 और 9 रो कोनोस प्रकार 4 आसीबो एठी एलसीएम केबे आसीबो बुझा पड़छि. त एडिशन केबे आसीबो नाही. 3 टा को जदि नवा 11 plus 3 14 हबो 12 by 14. आरटा हबो कोन ना 12 divided by 11 minus 3 केता हबो आपनकर 9. 14 और 9 मध्य में तो 2 आसीबो नाही. 5 नवा
5 टा देखो 12 11 plus 5 16 होगा 12 by 16 12 by 16 जगह तब ना 3 by 4 plus 12 divided by 11 minus 5 केता बेटी 6 आ काट देले 2 आपण मान देखो तो एडिशन करी ना 11 by 4 होची तो आंसर कोन होबा एठी ऑप्शन सी हला करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हला करेक्ट आंसर ओके चलो तो पिला नेक्स्ट नंबर को जीवा the bar graph below shows the quarterly sales of three products A B and C for a company during financial year. Answer the questions based on this data. Which product showed the highest percentage increase in sales from Q1 to Q4? Q1 to Q4. Product A, product B, product C, both product B and C. ठीक है जी पिला माने देखो product A, B, C. The bar graph below shows quarterly sales of three products A, B, C for a company during the financial year. Answer the questions based on this data. Which product showed the highest percentage increase in sales from Q1 to Q4? आपण मान देखो एठी जे Q1 ने केते अछि Q1 ने केते अछि हमरो 120 अछि Q1 ने आपन केते अछि एठी 120 ओके वन ट्वेंटी अच्छी एटी केते अच्छी देखो 200 120 टू 200 पिला केते अधिका ना 80 अधिका आमे लिखिबा केते ना 80 80 बाय केते लिखिबा ना 120 80 बाय 120 into 100 40 काटले 2 40 काटले 3 त माने 2 by 3% 2 by 3 into 100 माने आपण मानम भलो भाबरे जणा दिबो बोली हम भाबुची एटा 66.66% ओके क्लियर देन आसंदु एटी तापर कोन 90 ରୁ 160 90 ରୁ 160 पिला माने केते होबा ना 70 70 बाय केते लिखिबा ना 90 into 100 70 by 90 9 रे काटले आपनकर 11.11 होबो त 11 7 जा एटा नियंतु 77.77% ओके तापर आसला 70 to 120 केते दिला ना 50 50 by 70 into 100 त आपन जदी 7 रे काटबे अप्रोक्सीमेटली 14 होबे 14 पंजा एटा 70% हो तो निश्चित भाव में 77.77 ऑप्शन कौन हम ना बी हम 32 आंसर केते हला ना बी ओके क्लियर चलंतु पिला नेक्स्ट नंबर को जीवा देखो क्वेश्चन कांची बाय व्हाट परसेंटेज डिड द कंबाइंड सेल्स ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स इंक्रीज फ्रॉम Q1 to Q4 अच्छा तीनटा का मिसेबा 120 190 आउ कोन 70 120 रे 90 मिसिले पिला माने 210 210 रे 70 मिसिले केते हला ना 280 ओके Q1 सरी गला Q4 टा देखो एटा अछि केते 200 160 360 प्लस 120 एटा केते हला ना 480 पिला माने एटा केते अधिका ना 8 रे एटा 200 अधिका काहाट रे अधिका ना 280 ठारो अधिका केते परसेंट ना 00 ओके 00 कटि गला सॉरी 00 कटि गला 2 रे काटले 10 2 रे काटले एटा केते 14 14 7 जा त माने यूनिट्स प्लस नंबर आसी 7 14 7 जा 71.4% ऑप्शन डी हला कोन ना करेक्ट आंसर ओके क्लियर चलंतु नेक्स्ट नंबर को जीवा the total sales of all the three products Q3 ର total sales of products कोन नबा Q3 रो नबा पिला माने ओटा हला कोन ना 180 येला 130 180 plus 130 आउटा कोन आसला आपनकर एठी 100 ओके टोटल 0 8 3 11 11 carry 1 1 2 1 3 1 4 410 410 410 ऑप्शन सी हला एठी कोन ना करेक्ट आंसर 34 आंसर केते हला ना सी चला पिला नेक्स्ट नंबर को नबा 10 9 16 आपनकर कोन आसला एठी 45 ओके देखंतु आपनकर 10 उ 9 केम दिछि ना 10 into 1 minus 1 एटा हला 9 9 into 2 9 दुने 18 minus 2 केते एटा बना 16 सेमती 16 into 3 minus 3 48 minus 3 केते एटा हला 45 सेमती पिला माने 45 into 4 minus 4 180 minus 4 केता बेटा 176 पिला माने बुझियला चलो तो नेक्स्ट नंबर को जीवा क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्वेश्चन नंबर 45 से कही
each of the following problems has a question and two statements. What is statement 1 out of statement 2? S1 कहले statement 1 और S2 कहले statement 2. You have to decide whether statement S1 and S2 are sufficient or not to answer the questions. जदि पिला खाली S1 है sufficient है A1 हबो, जदि S2 है sufficient है A2 हबो. If you get the answer from S1 and S2 together A3 हबो. If S1 alone is sufficient in itself and S2 alone is sufficient, it A4 हबो. If you don't get answer from S1 and S2 together and some more information required to get answer. देखो, if 3-digit number is divisible by 8, 3-digit number is divisible by 8. अच्छा, तमाने तीनटा संख्या हमर 3-digit number टा कहा द्वारा divisible हबो ना आपनकर 8 द्वारा divisible हबो. Digit is units place is higher than the digit in tens place. तमाने एटा जदि आपनकर 4 हबो तो एटा हबो आपनकर 2. The number is divisible by 2 and 4. 2 and 4 माने 8 हला 8. पिला माने एटा आंसर हबो नाही. काहे कहलो? एटी जे डाटा टा सफिशिएंट नाही. कारण आमु कोइ जे तीनटा संख्या तो 8 द्वारा divisible हबो. एटा 8 रु बड़ हबो. किछि भी संख्या हेइ पारे. किछि भी संख्या हेइ पारे. सेकंड जो देछि जोटा 8 द्वारा divisible सेटा देछि 2 and 4 द्वारा divisible हबो. ता माने 2 द्वारा divisible फार्मूला जहा माने लास्ट डिजिट बा यूनिट डिजिट ता आपनकर कोन हेइ पारे ना 2 4 6 8 हेइ पारे बा 0 हेइ पारे. आउ कोन 4 रे मध्य लास्ट 2 डिजिट आउ 3 डिजिट रे कहले कोन माने लास्ट 3 डिजिट कोन संख्या लास्ट 3 डिजिट ता 8 द्वारा divisible संख्याटा 8 द्वारा divisible माने एमतिया कथाटा. फर्स्ट डिजिट माने एमति अछि डिजिट गुडा को यदि 8 डिजिट ता divisible हला 2 द्वारा, यदि लास्ट 2 डिजिट ता कोनोसी संख्या रे divisible हला एटा 4 द्वारा, यदि लास्ट 3 डिजिट ता कोनो संख्या द्वारा divisible हला एटा हला 8 द्वारा divisible बा एंटायर संख्याटा हला 8 द्वारा divisible. यदि लास्ट 3 डिजिट 8 द्वारा divisible ताल टोटल संख्याटा 8 द्वारा divisible. यदि लास्ट 2 डिजिट ता 4 द्वारा divisible ताल तबे टोटल संख्याटा 4 द्वारा divisible. यदि लास्ट ओनली 1 डिजिट ता 2 द्वारा divisible तबे संख्याटा 2 द्वारा divisible. तो एटी कोन हबो ना डाटा ठीक नाही बा डाटा हमर कोन हबो ना A5 हबो करेक्ट आंसर. पहले हम चलो नेक्स्ट नंबर को. Each of the following problems has a question and two statements. If you have to decide whether statement S1 and S2 are sufficient or not to answer the questions, your choice will be. If you get the answer from S1 alone but not from S2 alone, if you get the answer from S2 alone but not from S1 alone, ठीक है जो डाटा सफिशिएंट गुड़ा देछि A1 सफिशिएंट होतिबो A2 हो नथिबो, S1 सफिशिएंट होतिबो S2 हो नथिबो तो एटा A1 हबो. आ आपनकर S2 सफिशिएंट होतिबो S1 हो नथिबो, ठीक है जेटा A2 हबो. एमति डाटा देछि. एबे आसंतु क्वेश्चन. What is the minimum percentage to pass the examination? पचारला जे पास परसेंटेज ता केते कोन पचारला? What is the minimum percentage to pass the examination? Amar obtained 25% marks in the exam and Mukunda obtained 200 marks which is 40 more than Amar. अच्छा मुकुंद रखिछि केते मार्क ना 200 मार्क रखिछि. जोटा 40 मार्क अधिक रखिछि काहाटारु ना अमर ठार रखिछि. ताले अमर रे केते हला ना 160. अमर रे केते हला ना 160. तने 25% ता पिला माने 160 हला. 100% ता केते हला ना 640. 100% कहले फुल मार्क हला 640. कोथि पाइल ना S1 पाइल किंतु मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हम पाई परिबा नाही. अमर obtained 64 marks less than the minimum pass mark. माने अमर हमर केते मार्क रखिछि 160. से कहिछि अमर obtained 64 marks less than the minimum pass mark. ताले पास मार्क ता पिला केते हो कि 160 plus 64 आको एडिशन कर देले 16 केते हला 224. ताले 224 divided by 640 into 100. 224 divided by 640 into 100. आको जदि 0 0 काटि देबा 2 रे काटले आपनकर निश्चित भार एटा 5 हला. 2 रे काटले एटा 32 हला. 32 रे काटले एटा पिला 7 हबो. 7 5 जा 35% ऑफ आंसर. आंसर एठी हबो 35%. किंतु ये दीटा को डाटा दरकार. ओके दीटा को डाटा हमरो दरकार. तेनु आंसर कोन हबो जानि छथि पिला A3 हबो. If we get the answer from S1 and S2 together, although neither statement itself sufficient to answer the questions. Okay clear पिला. चलो तो नेक्स्ट नंबर के जिबा. Sum of the present age of Ali and Saad 48 years. Okay. If the age of Ali is thrice the age of Saad, if the age of Ali is thrice the age of Saad, then find the sum of their age 4 years hence. पिला माने दी जनकर 4 वर्ष बढ़ी जिवो. दी जनकर सम अछि 48. 4 वर्ष परे दी जनकर सम केते हो? त माने फर्स्ट पर्सन बा अली रो 4 वर्ष बढ़ी जिवो.
सात भी 4 वर्ष बढ़ी जीवो आंसर एठी केता हो ना 48 for 52 plus for 56 ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर पिला देखो if boys and girls can together complete a work in 20 days कोना ना boys plus girls 20 दिन कामटा करन both work together 15 days ताने 15 दिन काम कले गोटे दिन पिला 1/20 काम हो 15 दिन रे 15/20 काम हो ताने 3/4 काम सरी गला आ बाकी रहला केते ना 1/4 चारि भाग रु 3 भाग काम सरी गला और रहला केते गोटे भाग 1/4 ये 1/4 काम किए करछि ना आफ्टर अनदर 10 days boys finish the remaining work ताने 1/4 काम को 10 दिन लागुची पूरा कामटा केते दिन लागिवो 40 दिन को मानो पई ना बॉयज मानो पई ये क्वेश्चन पचार कोन देखंतु पिला माने इन हाउ मेनी डेज बॉयज अलोन कैन फिनिश द वर्क ताने बॉयज माने कामटा केते दिन कंप्लीट करिवे केते दिन रे ना 40 डेज ऑप्शन डी हला करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर ए कार टेक्स 3 hours लेस देन a bus for a journey of 600 kilometer if the speed of the bus is 10 kilometer per hour less than that of car पिला माने कार रो स्पीड हला x ताले बस रो स्पीड केते हो कोहंतु 10 किलोमीटर कम ता माने x - 10 कार रो स्पीड हला केते x बस रो स्पीड पिला 10 किलोमीटर कम हो ता माने कोन हो सेटा x - 10 ओके से कहजी आपण माने देखो एठी केते किलोमीटर जाउची 600 किलोमीटर 600 डिवाइडेड बाय x - 10 ओके प्लस नहीं माइनस हो बेटा माइनस 600 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू केते हला ना 3 hours एठी जमा इक्वेशन पिला पकेबनी इक्वेशन भूल ही पकेबो नाही काहे कि पिला ना देखो इक्वेशन पकेला हम कॉम्प्लिकेटेड हो कैलकुलेशन करिया पे तो आपण कोन करियो ना सीधा ऑप्शन को पुट करो एठी देखो 30 नवा 30 रु 10 गले 20 होबो त माने 600/20 माने ये आपण को हला 30 एठी देखो 600/30 माने एटा आपण को 20 30 और 20 रे गैप टा केते होजी डिफरेंस केते होजी 10 एठी अछि केते 3 हबनी तो आपण इक्वेशन को अवॉइड करो नेक्स्ट नंबर को आसंतु तापर को ऑप्शन को नबा 40 देखंतु 600 जदी एटा को 40 नउचे आमे कोन नउचे ना 40 नउचे 40 - 10 केते हो 30 हबो 600/30 600/30 माने एटा आपण करला 20 एटी 600/40 600/40 माने आपण कर एटा केते हबो 40 कर देला 15 हबो 20 रु 15 गले 5 किंतु हमर 3 अछि एटा हबो 50 नबा पिला 50 टा आइजो 600/50 - 10 एटा केते हो 15 600/50 केते एटा हो 12 15 - 12 केते हला ना 3 तो ऑप्शन सी हला हमर करेक्ट आंसर पिला माने नेक्स्ट नंबर को जिबा 22 नंबर देखन डीआई क्वेश्चन द पाई चार्ट बिलो shows the sector wise allocation of a country union budget 15 lakh केते टंगा अछि टोटल बजेट हला 15 lakh if the total budget is increased by 10% पिला 15 लाख रो जदी 10% बढ़ी जाए त माने 110/100 बढ़े देले हमें केते हला देखन 15 1 जा 15 5 1 carry 15 1 जा 15 16 एटा केते हला 15 1 16 16.5 व्हाट इज 16.5 ना एटा होची बजेट इंक्रीज हला पर एची 16.5 अच्छा पिला माने एठी देखंतु if the total budget is increased 10% next year आमे 10% बढ़े देला पर 16.5 हला एजुकेशन सेक्टर परसेंटेज allocation remains the same माने एजुकेशन टा पिला सेम अछि सेम परसेंटेज सेम अछि एजुकेशन एठी कोड हला 15% एठी 15% अछि क्वेश्चन पचार जी द न्यू एजुकेशन बजेट केते ना आर 15% बाहर करियो सीधा पिला माने को गुणी नतु 15 5 75 5 रखी 7 हला कैरी 15 6 जा 90 plus 7 97 7 रखी 9 हला कैरी 15 1 जा 59 24 तो आंसर एठी केता हो देखंतु आंसर एठी केता हो देखंतु 2.475 आंसर हला एठी केता 2.475 क्लियर चलो तो पिला नेक्स्ट नंबर को जिबा 23 नंबर the combined allocation of agriculture and others is what percent of the budget agriculture आउ कोन ना पिला and others agriculture देखंतु 13% other केते अछि 15% 12% ए मिसी केते हला 25% ऑप्शन डी हला आपनकर करेक्ट आंसर 54 आंसर हला डी चलो तो पिला नेक्स्ट नंबर the amount allocated to defense is approximately how many times the amount allocated to health defense पिला माने देखंतु निज आखिरे देखंतु केते अछि 22 अच्छा डिफेंस approximately how many times the amount allocated health पिला देखंतु 10 अच्छा 22 टा 10 रो केते टाइम्स ना 2.2 टाइम्स 22 टा 10 रो केते परसेंट 2.2 टाइम्स ओके ऑप्शन सी हला करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर चला examine
the statements about the given series in the series 2 6 12 20 30 42 the next term is 56 अच्छा पिला माने देखंत 2 अछि 6 अछि 12 अछि 20 अछि 30 अछि 42 ता परे पचार जी नेक्स्ट टर्म टा केते हो ना 56 हबो की हमु पचार नेक्स्ट टर्म टा 56 हबो की देखि दबा आ डिफरेंस टा केते ना 4 आ डिफरेंस टा केते ना 6 आ डिफरेंस टा केते ना 8 आ डिफरेंस टा केते ना 10 आ डिफरेंस टा केते 12 पिला कहले ता पर डिफरेंस टा केते आसो 14 ता माने 42 प्लस 14 की मिसे देले केते होची 56 तने ऑप्शन ए जो आईटा ठीक अछि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज ये जो टर्म लिखिनी आर डिफरेंस पचार जी एपी रे अछि कि हां 4 6 6 8 8 10 2 12 14 ता माने सबु दरे कोन होईची ना 2 2 2 2 बड़ी बड़ी का जाईची तनो हां एटा पिला अछि the nth term of the series n whole into n plus 1 पिला डी 2 अछि मन करो n टा नबा 1 1 plus 1 एटा के देला ना 2 तापर एटा 6 अछि एटा 2 नबा 2 plus 1 देखंतु 2 3 जा केते अछि 6 एटी अछि आपन 12 n को 3 नबा 3 whole into 3 plus 1 12 तनो अछि तनो आपन करो ट्रिपल आई टा ठीक अछि ट्रिपल आई टा कोन अछि ना ठीक अछि एबे आई भी के आसन आई भी रे कोन देला आपन करो आई ठीक डबल आई ठीक एबे ट्रिपल आई के आसन all the terms of the series are prime number सेटा नो कारण 16 टा कोन प्राइम नंबर ना 12 टा प्राइम नंबर ना 20 टा प्राइम नंबर तनो एटा नुहे तनो आंसर रे कोन हला ना 1 2 3 तनो ऑप्शन ए हला करेक्ट आंसर आई डबल आई एंड ट्रिपल आई ओनली करेक्ट आंसर ओके चलंतु पिला नेक्स्ट नंबर सब पिला गुडा हमर पढा आइसी बहुत इजी क्वेश्चन सब एतर का आसी the sum of exponents of prime factors and prime factorization 196 पिला 14 स्क्वायर 14 टा जदि हम भांगी दबा एटा कोन लिखा 7 into 2 रो स्क्वायर ता माने एटा कोन हबो 7 to the power 2 into 2 to the power 2 ताले 2 plus 2 जे केते एठी हला 4 टा बुझा पड़ला किबा जाकू पचाची 4 टा हला कोन करे द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 आंसर एठी केते हला ना 4 चलो नेक्स्ट नंबर पिला 27 नंबर 2 pipes A and B A fill करछि पिला देखंतु 12 घंटा रे and B fill करछि केते घंटा देखंतु 18 घंटा रे पाइप C can empty the tank C empty करछि केते 9 घंटा empty माने माइनस अरे एलसीएम नहीं जानतु 36 12 3 जा 18 2 जा 9 4 जा 4 टा पिला डी माइनस ए माने फिल करछन केते 5 ये खाली करछि केते 4 रहुछि केते आपनकर 1 36 यूनिट रहया पय केते समय लागिवो 36 यूनिट रहया पय केते समय लागिवो 36 by 1 तो आपनकर आंसर आसला नेक्स्ट नंबर पिला माने आपनकर 25 टा क्वेश्चन आस्तिला तेना डिस्कशन सरी गला ठीक अछि म आशा करबी आपन मानकर ए पेपर निश्चित भाबरे भलो होइतिबो थैंक यू वेरी मच बाय हेलो वेलकम टू वानिक स्मार्ट आज आपर जो एग्जाम गला ओएस रो प्रीलिम एग्जाम तार क्वेश्चंस डिस्कशन रीजनिंग तो आसन तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा रीजनिंग रो फर्स्ट क्वेश्चन हम पई थिला इट्स ए सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन जोड़ा कि आपण इजीली तो सॉल्व करथिबे देखुन एथिरे 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ they sit next to M ताले J and M are consecutive positions on occupy करने वे but not to K ताले J K रो नेबर हबो नहीं but not to N sorry not to N N रो नेबर हबो नहीं not to N
K is sitting next to L. K and L conjugate position रहिबे next to माने both side next to हबो left ru ही परिबो right ru ही परिबो next to position. Who is sitting on the extreme right? Who word is used for L? L पे who word टा लगी ची. So L पे who word टा यदि use हला ताले L is sitting in the extreme right corner. तो पांचटा सीट क्रिएशन कर दवा. L को राइट कॉर्नर रे हम नहीं गलु. L is right corner. L रो नेबर के हबो K. K को हम रखि देलु. एदिटा पोजीशन फिक्स हे गला. देन J आउ M तो कंजुगेट पोजीशन रहिबे किंतु J रो नेबर N हबो नाही. J रो नेबर दी N हबोनी. J को दि आपण एई पोजीशन रखि देबे ताले एठी रखि देबे M को. अच्छा आउ रहिछि N does not sit next to K. N K रो मध्य नेबर हबो नाही. ताले एई पोजीशन रे K रहि परिबोनी. तो K पई रहिला ई जोड़िया मात्र सीट. तो एई जो जोड़िया सीट रहउछि K पई एई जोड़िया सीट जदि हमें एठी जेकोन जगह दी N को रखि दोछु ताले एई दिवन को बसिया पई J आउ M रो बसिया पई सीट हम पई अवेलेबल हबोनी. ताले N टा डेफिनेटली N सीट रे ही बसिबो. तो N टा N सीट रे बसिला ऑब्वियसली हमें बतन J आउ M को रखि परिबा. J and M आर नेक्स्ट पोजीशन रे रहि जिवे. तो एठी रहि गला M एठी रहि गला J. अच्छा मु आस्क करछि कोन N does not sit next to K. तापर who is sitting right to M. M right रे K रहिला J. So answer option A opt करंतु. Question number that's your 9 answer is option A. A is the answer to question number 9. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा. It's a appendix. It's a bonus question आपण मान पई निश्चय हेतिबो. एतरे आस्क करि जे हमको कोन how many dots are opposite to the face having 3. Alternate positions are opposite to each other. तीन पास अछि तेनु आपनकर 6 रो opposite आसीबो के 3 having 3 dots when the dot is folded in a 3 रो opposite होछि 6. तो 3 रो opposite 6 जदि आसी होछि आपण ऑप्शन D ऑप्ट करंतु. D is the right answer to this question. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा. इट्स ए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन. फैमिली ट्री ड्रा करी इजीली को हैंडल करि परिबे. एते गला हमको से एथिरे P द सन ऑफ Q. तो P सन जे मेल हला मु पॉजिटिव साइन देबी. फीमेल हले नेगेटिव साइन पुट करिबी. P द सन ऑफ Q. R who is sister of Q. R sister of Q has a son S. Son रहिला S and daughter X. Daughter रहिला X. Y is the maternal uncle of S. S रो maternal uncle माने से R रो भाई हेतिबो. तो maternal uncle of S. तले how is P related to S? P रू S को आपण मूव करिवे. ऑब्वियसली आपण एको कोन लेबे cousin. Cousin means what? Related brother or sister is called finally cousin. So cousin option ऑप्ट कले आपनकर ऑप्शन C ऑप्ट करंतु. C is the answer to question number 11. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. क्वेश्चन नंबर 12 सी सेम डायग्राम ऊपर थिला. हाउ इज X रिलेटेड टू Y. पुनी अथवा डायग्राम करे पे पडिबाटा को इज द सन ऑफ Q. R is the sister of R who is the sister of Q has son S and daughter X. And Y is the maternal uncle of S. रे बतन से आस्क करछि हाउ इज X रिलेटेड टू Y. X Y रो कोन आसीबो. तो निस आसीबो भानुजी. तो ऑप्शन D ऑप्ट करंतु. D इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12. चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा. इट्स ए रैंकिंग क्वेश्चन. रैंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन को जाय को ऑर्डरली बेसिस से रीअरेंज करंतु. आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर कट पिक्चर पाइबे. किछि कंफ्यूजन माइंड को आसीबनी. रामो इज older than Shyam. Ram older than Shyam. Shyam is older than Mohan. Gopal is younger than Ram. Therefore, Ram is older than Gopal. Gopal is younger than Ram, but older than Shyam. Therefore, Gopal is older than Shyam. Gopal is older than Shyam. माने बताने इटी हमें पुट कर दवा.
Ram older than that's your Gopal. Gopal older than Shyam. And Shyam is already older than Mohan. So next Hari is younger than Shyam. If Hari younger than Shyam, अर्थात Shyam is older than Hari. मार्क करंतु फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनटा पोजीशंस फिक्स हो गला फोर्थ आउ फिफ्थ पोजीशन रे हमें पुट करि पारुछु काहाकू मोहन को आउ हरि को बट सी हमको आंसर ऑप्शन रे दोछि गोटे ऑर्डरली बेसिस रे तुमको कंप्रोमाइज करी आंसर नबा पे पड़िबो तो देखंतु हमर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनटा तो पाई गलु राम गोपाल श्याम तापर मोहन हेई पारे किंबा हरि हेई पारे मोहन हरि तो ये गोटे ऑप्शन हेई पारुछु आपनकर आंसर आउटे राम गोपाल श्याम हरि हेई पारे किंबा मोहन हेई पारे कारण मोहन हरि भितर किए ओल्डर किए यंगर डाटा इज नॉट मेंशन तो ये मध्य गोटे ऑप्शन हेई पारु चले ए और डी जोड़ी ऑप्शन एथिरे पळे आसी पारुची एक्चुअली रैंकिंग ऑर्डर रे देखिया पे गले ऑर्डरली बेसिस रे हमें तो किछि जिंस आउटसाइड एज्यूम करि परिबा नाही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जति की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड्स करा होची से इन्फॉर्मेशन बेसिस रे हमें ताकू ऑर्डरली बेसिस रे अरेंज करलु तो एथिरे हमें कंफर्मिटी पाई पारु नाहु जे मोहन आउ हरि भितर के ओल्डर हम किए यंगर हम तेणु आपंकर ऑप्शन ए भी आसपारे आंसर डी भी आसपारे आंसर जोड़ी आंसर आसपारे एनीवे एमती क्वेश्चन तो किसी टेक्निकल फॉल्ट समटाइम थाए चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इस आसीगला आपंकर गोटे डिसीजन मेकिंग एडमिशन टेस्ट क्वेश्चन आपंकर क्राइटेरिया सब दिखाई ये क्राइटेरिया को आपन पढ़ी सारा पर डिसीजन नापी पड़ो व्हाट शुड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन So at the time you have to think yourself that you are the decision taking authority and you are the last person to take the final decision. So asantu criteria oda first dekhi daba graduate heitibo 55% mark have secured at least 40% marks in interview re 40% darkar a post qualification experience of at least 5 years experience hoya darkar 5 years se marketing division in any organization have secured at least 45% mark in selection examination and have a postgraduate degree or diploma in marketing with at least 60% mark. ये पांचोटी कंडीशंस को से देखुची प्राइमरी कंडीशन हिसाब रे तापर से किसी हमको रिलैक्स दोउची कंडीशन नंबर 2 ऊपरे 2 रे रिलैक्स कोन से हमको प्रोवाइड करूची यदि 40% मार्क इंटरव्यू रखी नथिबो बट एटलीस्ट से 60% मार्क होइतिबो सिलेक्शन एग्जामिनेशन रे दिस इज योर सिलेक्शन एग्जामिनेशन ये कंडीशन नंबर 4 टा 40% जरा अछि सेरा दे 60% रखिथिबो से केस हम रेफर करि परिबा बीपी मार्केटिंग एनादर गुटे रिलैक्स दोउछि से कंडीशन नंबर 3 टा ऊपरे कोन एक्सपीरियंस कंडीशन पे से दोउछि रिलैक्स कोन जदि तार वर्क एक्सपीरियंस थिबो एटलीस्ट 3 इयर्स एज डेप्यूटी मैनेजर तल ता केस को हम रेफर करि परिबा जीएम मार्केटिंग जोड़ी कंडीशन पे से हमको रिलैक्स दोउछि आ अन्य कंडीशन पे किसी रिलैक्स नाही आसंतु एबे यार कंडीशंस को पढि दबा एवं देखिबा कोन होछि आंसर Burma is secured 56% mark in BBA. 56 are graduation का 55 satisfy करूची. He has been working in the marketing division of the company for the past 7 years. 7 years से माने experience तार अच्छी. तब तार experience दरकार 5 years ये satisfy करूची. The next दला her postgraduate degree in marketing management with 62% marks. अच्छा एटा हम दरकार पोस्ट ग्रेजुएट सिक्योर 60% मार्क अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर एटा एटा होची आपनकर मैनेजमेंट रे 60% मार्क दरकार ये 62% रखिछि ठीक अछि एंड से सिक्योर 62% मार्क इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन रे हमर दरकार 60% से 62% रखिछि एंड हैज 38% मार्क इन इंटरव्यू त देखंतु इंटरव्यू रो मार्क ता केते अछि इंटरव्यू रो मार्क आपनकर अछि केते एथिरे 40% अछि बट से रखिछि 38% ताले एही कंडीशनटा से सैटिस्फाई करि पारु नाही यदि सेही कंडीशन सैटिस्फाई करि पारु नाही तार सब्स्टिट्यूट कंडीशन थ्रू रे से सैटिस्फाई करि परिबो ताले तो हम रेफर करि परिबा सब्स्टिट्यूट कंडीशन कोन अछि एथे जेई से है सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन देखि जंतु सिलेक्शन एग्जामिनेशन से केते परसेंट मार्क रखिछि सिलेक्शन एग्जामिनेशन 62% रखिछि मोर देन 60% ताले हम दा केस रेफर करि परिबा कहाकू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग तो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग देखो तो को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन डी रो अच्छी डी इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा सेम कमेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पुनी क्वेश्चन देखे देवा प्रभात सिक्योर 59% मार्क इन बीए ये सैटिस्फाई कला
secure 60% mark in interview रे हमर दरकार 40% mark interview रे satisfy करिछि and 40% mark in selection examination रे selection examination दरकार 45% mark but C3 selection exam रे रखुछि केते 40% मार्क रखुछि ए कंडीशन टा वैल्यूएशन कला कोटा कंडीशन नंबर 4 टा कंडीशन नंबर 4 वैल्यूएशन में मार्क करंत किछि एक्सेप्शन नहीं केवल कंडीशन 2 पई गोटे अछि आ कंडीशन 3 पई अछि बट फोर्थ कंडीशन रा वैल्यूएशन पई देयर इज नो रिलैक्सेशन सो द पर्सन शुड नॉट बी सिलेक्टेड तो अपन रेस्ट कंडीशन आ किछि न पढ़ी कि मध्ये डिसीजन नै परिबे आंसर ऑप्शन बी करंतु 24 क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी देन चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 25 क्वेश्चन इट्स आसीगला अपन गोटे कैलेंडर क्वेश्चन इसे पजल फॉर्मेट दिया थे लैंग्वेज टा बुझी पाले इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देबे तो इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे यस्टरडे रो बिफोर डे बिफोर यस्टरडे दिस इज व्हाट ना फ्राइडे एउ से हमको फ्राइडे सारी इंफॉर्मेशन दोसी व्हाट विल बी 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो सो यस्टरडे नेक्स्ट डे इज व्हाट टुडे Today after day is tomorrow and day after tomorrow 2 days that is first day and second day this is which day eta dekhon to Friday yes la Saturday apankar Sunday today is Sunday and tomorrow is Monday day after tomorrow is Tuesday after that Wednesday and the last day will be Thursday. So Thursday is our answer. So Thursday up karantu option B is the answer. Question number 25. Chalantu next question को move करिवा. Question number 26 ये आसीगला अपन कर गोटे alphabet series question. Gap between the letter देखले ही जीवो देखो तो एटी सेकंड लेटर अछि ए एटी सेकंड लेटर ई सेकंड लेटर आई सेकंड लेटर यू सबुतरे भावेल गुडी को यूज होसी सीरियल ऑर्डर रे ए ई आई तार एठी आपनकर ओ आसीबो मिडिल ले जदी ओ आसीबो मिडिल ले ताले आपन ऑप्शन बी काटी दियंतु ऑप्शन सी काटी दियंतु ऑप्शन डी हेई पारे किबा ऑप्शन ए हेई पारे आंसर आ ओनो कोनसी ऑप्शन आंसर होबा नाही लास्ट लेटर चेक कर दियंतु पी तापरे क्यू माने +1 क्यू रे +1 आर रे +1 क्वालिटी एस होबो एस रे +1 क्वालिटी आसीबो टी ताले ओ एस आपनकर रहइबो एठी आपनकर ओ परे क्यू अछि ऑप्शन कटि गला ऑप्शन डी हे गला आंसर आ फर्स्ट लेटर को चेक न कले मध्य अपन आंसर पाई परछन तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर ऑप्शन डी ऑफ करंतु डी इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा 36 नंबर क्वेश्चन ये अपन का आसीला गोटे alphabet series question the word disturbance the first letter is interchange with the 11th letter तो देखंतु को randomly proper पे मुआ को सॉल्व कर दोची RUBAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तार फर्स्ट लेटर चेंज होबो कहा संगरे लास्ट लेटर माने 11 साथरे एंड तापर से नेक्स्ट होची सेकंड लेटर विथ 10th तार सेकंड लेटर 10th ताले एठी सी आसीबो एठी आई आसीबो एंड तापर से लैंग्वेज लगैची सॉन मीन सीक्वेंस इज कंटिन्यू ताले हम से सीक्वेंस रे कंटिन्यू करबा एठी आसीबो एन एठी आसीबो एस देन एठी आसीबो टी एठी आसीबो सॉरी एठी आसीबो ए एठी आसीबो टी एटी आसीबो बी एटी आसीबो आर एटी गला यू आ गोट लेटर मजे रह गला कांस्टेंट तो से आस्क होची व्हाट विल कम आफ्टर द लेटर टी टी आफ्टर द कोलो लेटर सी एस सी तो ऑप्शन सी ऑफ करंतु क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज ऑप्शन सी चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा इट्स ए काउंटिंग क्वेश्चन काउंटिंग द फिगर find the number of blocks when the given stacks of blocks is separated q counting रे से पचारि q counting रे आपन कर सबटू बेस्ट जिंस कोन चंती यदि रूफ रे आपन नंबरिंग कर दोचन ताली इजीली यार आंसर पाई जंती देखंतु एटी केवल गोटे q अछि एटा 1 1 1 1 1 लिखि दे इ जो q टा अछि यार बिलो रे गोटे q टे थिबो ताटा को 2 रखंतु
एटा सेमती 3 रखंतु यार बिलो रे 2टा थिबो एटा को 4 रखंतु यार बिलो रे 3टा थिबो एटा को 5 रखंतु यार बिलो रे 4टा थिबो सेमती अकॉर्डिंगली आपण सब रूफ रे नंबर पकई दियंतु ये 4 4 एटा आपनकर 3 एटा आपनकर 2 एटा आपनकर रहइबो 3 3 3 रहइबो 2 ये रहइबो आपनकर 2 2 2 2 एटा आपनकर रहइबो 1 1 1 1 माने एई संख्या गुडी को सब मिसै देले आपण आंसर पाइ जिवे तो मिसले आपण 5 4 9 3 12 2 14 को 15 13 रे पाइले 15 टा 5 9 3 12 2 14 को 15 ये 4 4 8 3 11 13 1 14 3 3 9 2 11 1 12 तापर 4 8 1 9 तापर आपण पाइले 1 2 3 4 5 ये संख्या मिसै देले सब होई जो 5 4 9 9 2 11 11 20 5 25 5 कैरी 2 3 2 5 55 आछी आपनकर आंसर तंको तो इजी वे रे आपण को काउंटिंग करि परसंती टू काउंटिंग रे एमती रूफ रे आपण नंबरिंग पके देबे नंबरिंग पके देले आपण इजीली यार आंसर पाइ होचंती दिस इज द ट्रिक्स फॉर काउंटिंग ऑफ द क्यूब्स चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा कैसी गला आपनकर लॉजिकल वेन डायग्राम जानछन तो रिलेशन को कोलिंग्स करे पे पड़िबो जोटा कि लॉजिकली जस्टिफाई करे पे पड़िबो एगोटा सोसाइटी पई एक्सेप्टेबल होइतिबा दरकार तो तीनोटी रहउची आपनकर वर्ड फीमेल मदर डॉक्टर अगो दे आपन कोलिंग्स करिवे ऑल मदर्स मस्ट बी फीमेल एंड डॉक्टर्स केस आसिले सम डॉक्टर्स आर मेल एंड सम डॉक्टर्स आर फीमेल डॉक्टर्स तो ये डॉक्टर रिलेशन मदर साथ रे सम रे मेंटेन करिवो एवं फीमेल साथ रे मध्य सम रे मेंटेन करिवो समरे मेंटेन हम कहीं सम डॉक्टर्स आर मदर सम आर वर्ष स्पिनस्टर कि मैरेज करते जे संतान न थई पारंती बट एटा आसीबो आपनकर ऑल ले मदर फीमेल को आसीबो ऑल ले तनो आपन देखंतु ए दिटा एलिमेंट ऑल रहइबो ये सम रे आपनकर रहइबो ऑप्शन डी ऑफ करंतु इनोटा आपन रखि दियंतु मदर मिडिल ला रखि दियंतु एटा फीमेल एवं एटा रखि दियंतु डॉक्टर सम डॉक्टर्स आर दैट्स योर मदर सम आर नॉट सम डॉक्टर्स आर फीमेल सम आर मेल all mothers are female some females are mothers so on answer satisfy sabu angle ru करूची answer option D of करंतु 38 question answer is option D D the answer to question number 38 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 40 तो 40 नंबर क्वेश्चन देखो गोटे सीटिंग अरेंजमेंट ना गोटे अरेंजमेंट आसिला 5 persons are seated in a row Arjun is not at the either ends ये गोटे एंड सीट रे बसी नहीं भरत इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन चेतन जोठी बसिबो तार इमीडिएट लेफ्ट रे के आसीबो भरत आसीबो एटा गोटे कंफर्म पोजीशन रे देइछि भरत इज इन द लेफ्ट ऑफ चेतन दिनेश इज एट वन ऑफ द एंड्स ताल दिनेश गोटे एंड सीट रे में बसे देखि देखि देबा 1 2 3 4 5 दिनेश को सपोज मु लेफ्ट हैंड नहीं गली दिनेश किबा दिनेश को राइट हैंड में निया जाई परिबो 1 2 3 4 5 दिनेश को राइट हैंड निया जाई परिबो कना से गोटे एंड सीट रे बसची दिनेश तापर एसन इज नॉट एडजेसेंट टू अर्जुन अर्जुन आउ एसन माने नेबर हिसाब रे बसी परिबे नाही बर्तमान यही सीट रे देखंतु अर्जुन इज नॉट एट वन ऑफ द एंड्स ताले अर्जुन गोटे मझी सीट रे ही बसथिबो अर्जुन सिटिंग पोजीशन टा कोन ना गोटे मिडिल जोन रे गोटे कोठी अर्जुन बसिबो एंड सीट रे बसिबो तार अर्जुन पई तीनटा पोजीशंस रहउची अच्छा चेतन आउ भरत रहिचंदी इमीडिएटली तो सपोज हम एठी चेतन को नै जिबा इमीडिएट लेफ्ट नै जिबा भारत तापर से हम गोटे नेगेटिव कहितला कोन अर्जुन एहसन नेबर होबनी एठी देखंतु अर्जुन एहसन नेबर हेई पारु नाही माने यदि अर्जुन एहसन जदि आपण रखिले एठी ताले कोनस बेकार कंडीशन हेई परिबन काना अर्जुन एठी बसिले कि जोउठी बसिले भी से नेबर हेई जिवो ताले चेतन थर्ड पोजीशन एठी बसि पारला नाही चेतन थर्ड पोजीशन में बसि पारु नाही ता चेतन को फोर्थ पोजीशन नबा चेतन चेतन लेफ्ट रखि दवा काकू भारत एवं तापर आसी गला आपण करो अर्जुन आउ एहसन रो पोजीशन तेना अर्जुन नेबर कार होबनी एहसन नेबर होबनी तो अर्जुन को आपण दी एठी रखि दले अर्जुन को एठी आसी गला एहसन ये उडा आसी परुची तना अर्जुन एंड सीट रे बसिबनी अर्जुन नॉट एट द एंड सीट तना अर्जुन एठी एंड सीट बसिबन ताले एठी आसीबो एहसन एठी आसला अर्जुन
ये आपणकर गोटे अरेंजमेंट हो पार दिनेश को आम रईट हैंड साइड रखीदेलु तापर सपोज आम चेतन को रखी फोर्थ जो आम चेतन को 1 2 3 4 5 फास्ट सीट चेतन को रखीदे ताले सेकेंड सीट्रे रखिपर भारत को एवं अर्जुन तो एंड सीट्रे बसबनी अर्जुन को ये बसईदे और ये बसईदे क्या एहसान को ये गोटे अरेंजमेंट हो पार तो जोड़ी अरेंजमेंट को कवर करा पारुची गोटे आछी दिनेश अर्जुन भारत चेतन एहसान आउटे आदर्श एहसान भारत चेतन अर्जुन दिनेश जोड़ी आपको आसपार हमको आस्क कर कौन हु इज सीटेड इन द मिडिल पोजिशन में बस किए गोटे अरेंजमेंट देखिले भारत आसपार आउ अरेंजमेंट देखिले चेतन आसपार जोड़ी आपंकर पॉसिबिलिटी आसपार आंसर हिसाब से तेणु सी चेतन हो पारे कि भारत हो पारे ऑप्शन बी आउ सी भितर कोटा भी गोटे आंसर हो पार तो जेहेतु ये टेक्निकल फॉल्ट किसी रोचे आ गोटे किसी एक्सट्रा डाटा मिलते आम सॉल्व कर पारथु कन्फर्म बेसिस तो ये क्वेश्चन आंसर आप ऑफ करूँ बी और सी बी कि सी रु कोटा गोटे भी आंसर हो पारे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा ये आस गोटे कोडिंग क्वेश्चन ये टाइप कोडिंग क्वेश्चन लॉजिक रो इंटेंसिटी पर डिपेंड्स करे जे आपनकर एग्जाम हॉल केते टाइम कंज्यूम हेतिबो जदि लॉजिक इंटेंसिटी इजी अछि तो इजी क्रैक जदि डिफिकल्ट अछि तले डेरी रे क्रैक बट एटा आपनकर इजी लॉजिक रे थिला तनो आपन आपको इजीली ये करथिबे सॉल्व कर देथिबे INGENER नॉर्मली एगुडा को आमे सब सॉल्व करू को बेसिस रे फास्ट आमे को सॉल्व करू अल्फाबेट बेस वैल्यू किंबा अल्फाबेट रिवर्स बेस वैल्यू या ऊपर ही सॉल्व करा जाए यहाँ दिन हो पारे हमको विभिन्न प्रकार वे को जावाई पड़े तेनाली आम जो नॉर्मल अल्फाबेट बेस वैल्यू यूजर्स को नहीं आसवा नॉर्मल बेस वैल्यू को मिसाइल के 131 हेनी यार रिवर्स बेस वैल्यू को आप ने ये 22 हम ये 13 हम ये आपंकर 20 हम ये आपंकर हम नगले 18 आसो ये आपंकर 13 आसो ये 22 आसो ये 22 आसो ये आपंकर 9 आसो ये सब नंबर को एडिशन कर दो 22 3 5 10 35 35 को 55 55 55 10 65 65 70 33 33 3 66 86 2 28 10 98 100 काउंटिंग करदे बेटर हम ये 3टा मिसेदेले 3 2 5 4 को 5 तापर ये 3टा नहीं गले 18 13 22 8 2 10 3 13 2 4 को 5 तापर आपनकर ये होची 31 ताल 31 53 55 5 3 8 5 5 10 5 3 8 को 9 5 5 10 3 13 139 होची केतरा लेटर एथरे होची 1 2 3 4 5 6 7 8 139 आपनकर होची रिजल्ट एटा 139 चतुर्थी 8 माइनस कर दोचंती ताले आपन का होची 131 तो लॉजिक कोन रहला रिवर्स अल्फाबेट बेस वैल्यू एडिशन करा होची तापरे वर्ड लेंथ सेथरु माइनस कर दिया होची तो सेटा आपन इनकम रे यूज करले भी 97 पाइबे टीचर सेटा हम यूजेस करबा सेटा ही पाइबा एटा 20 हेले आपन 7 आसीबो ये 5 हेले ये 22 आसीबो ये 1 हेले ये 26 आसीबो ये 3 हेले ये 24 आसीबो ये 8 हेले ये आपन आसीबो 19 ये 5 हेले ये आसीबो 22 ये 18 हेले ये आसीबो 9 तन एही नंबर गुडा को हमें एडिशन कर दबा 22 7 29 30 30 25 हेले आपन आसीबो 55 55 59 हेले 59 69 79 89 99 98 98 100 120 129 129 रु आपन माइनस में केते 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस कले आपन केते आसीबो 122 122 आपन करले ऑप्शन बी ऑफ करंतु क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इज ऑप्शन बी चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा ये आसीगला आपन गोटे डायरेक्शन क्वेश्चन से आस्क जेते होची द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एटा यदि आपन पढि नथिबे करेक्शन नहीं थिबे ताले ठकाम रे पड़िया चांस अछि तो इनकरेक्ट अबाउट अ मैन हु वर्क्स 5 किलोमीटर नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट रो नॉर्थ को गला 5 3 किलोमीटर ईस्ट को गला 3 देन 5 किलोमीटर साउथ को आसिला 5 स्टार्टिंग पॉइंट
एटा आपनकर एंडिंग पॉइंट आस कुछ कोटा ट्रू नुहे ही इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर ईस्ट अच्छी टॉपटा 3 अच्छे मैंने 3 हम एटा करेक्ट अच्छी ऑप्शन बी कहते ही इज एट द सेम लैटिट्यूड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट रु सेम लैटिट्यूड रोची सेम पैरेलल पॉइंट एटा मध्य ठीक अच्छी ऑप्शन सी ही इज द नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ रे स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट रे रोची यही कंडीशन टा आपनकर भाउलेशन होची करेक्ट नुहे ही इज वर्कड ए टोटल ऑफ 13 किलोमीटर 13 तो टोटल जाऊँगी 5 जाऊँगी 5 3 8 8 5 13 13 जाऊँगी ये भी ठीक अच्छी ऑप्शन सी टा आपनकर एथिरे रॉन्ग अच्छी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 59 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा आसीगला आपनकर गोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन जानचंती तो रूल्स से सॉल्व हुए से रूल इज कौन बीओडी एमएएस ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सीक्वेंस को अपन सॉल्व करिवे कोड टाको डिकोड कला परे पाई जिवे 24 दिस साइन देखि दोंतु ए साइन टा कोन अछि डिवीजन 6 तापर अल्फा अल्फा आपनकर देखि दोंतु कोन अछि साइन टा अल्फा इज प्लस हेले 5 तापर बीटा हेले मल्टिप्लिकेशन 6 तापर अछि ट्रायंगल हेले आपनकर एठी ट्रायंगल साइन काई अल्फा प्लस बीटा रहा मल्टिप्लिकेशन वाई रहा डिवीजन एंड डेल इज आपनकर डेल में आपनकर ट्रायंगल हम प्राय तो ये ट्रायंगल साइन टा तो एथिरे नाही एटा प्रिंटिंग मिस्टेक है आमर पीपीटी रे परहाप्स जोथि पई कि ट्रायंगल साइन टा गुटे पळे आसी ट्रायंगल साइन नाही एथिरे तो यार आंसर टा मु डायरेक्ट फाइनली कहि दोउची क्वेश्चन नंबर 63 रे आपण आंसर ऑप्ट करिवे 20 आसी रे आंसर 20 आसी फाइनल आंसर तो आंसर ठीक अच्छी कौन जानते ये रूल्स थ्रू रे सॉल्व करिवे एठी साइन टा जेहेतु ट्रायंगल रही अछि त को साइन रे आसुची माने आपनकर रहिला साइन कोन अल्फा रोची बीटा रोची गामा रोची डेल रोची चारोटी साइन ट्रायंगल साइन नाही क्योंकि से ट्रायंगल साइन टा हम इथरे पुट ही छी बाय चांस रॉन्ग रे रही तो अकॉर्डिंगली जहाँ भी हो आंसर आपनकर 20 आसुची कैलकुलेशन रे 20 ही बाहरी रे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा से आसगला ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्मेट एटर क्वेश्चन जदि निजको इन्वॉल्वमेंट अपन करनबे क्वेश्चन रे इजीली आंसर पाई जिवे देछि ए लेडी पॉइंटिंग टू ए मैन गोटे मैन को गोटे लेडी टे पॉइंट करी कथाटा कहूची कौन से कहूची दैट मैन ऑफ द फोटोग्राफ सेज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ दिस मैन माने से फोटोग्राफटा ऑफ दिस मैन से मैन रो सन रो सिस्टर ताथ से मैन रो से कौन होबो डॉटर ऑफ द मैन से मैन रो जे डॉटर से किए इज माई व्हाट कहा पे लगी छी जे कथाटा कहूची लेडी ही कथाटा कहूची माई व्हाट ना माई मदर इन लॉ माई मदर इन लॉ इज व्हाट दैट मदर इन लॉ इज से किए दैट मेन्स डॉटर मेन जे डॉटर सी हूँ लेडी माने यही लेडी रो मदर इन लॉ और से आस्क होची कोन हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी से लेडी रो हस्बैंड जदि से लेडी रो आसिला मदर इन लॉ लेडी रो जी हस्बैंड तार से कौन हम ना मदर तो लेडी रो मदर ये होचन कौन बापा से आस्क करूची हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन से तार कौन हम ता मां कर बापा माने कौन अजा तो मैटरनल ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड फादर ऑप्शन इज सी द आंसर टू दिस नंबर 64 तो निजको इन्वॉल्व करने ले क्वेश्चन इजी आंसर अपन डायरेक्ट करनेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा ये आसीगला आपनकर गोटे लॉजिकल क्वेश्चन रे स्टेटमेंट दिया गला कंक्लूजन दिया गला को कंक्लूजन टा लॉजिकली करेक्ट होची आपन डिसीजन नवा पे पड़िबो सम मेन आर एजुकेटेड आपन टाको चाहिए सिलोजिम फॉर्मेट रे भी यूजेस कर सॉल्व करि परिबे सम मेन आर एजुकेटेड मेन नहीं गले एजुकेटेड नहीं गले सम पार्ट से एजुकेटेड पर्सन्स प्रिफर स्मॉल फैमिली एजुकेटेड पर्सन कहूची माने एज ए होल समस्त सेटा बुझा जीवो ऑल एजुकेटेड पर्सन्स प्रिफर व्हाट फैमिली ना स्मॉल फैमिली
स्मॉल फैमिली बर्तमान से दौर हमको कंक्लूजन ऑल स्मॉल फैमिली आर एजुकेटेड ऑल स्मॉल फैमिली एजुकेटेड नुहे सम स्मॉल फैमिली एजुकेटेड हम वन टा लॉजिकली नॉट करेक्ट सेकंड सम मेन आर प्रिफर स्मॉल फैमिली सम मेन प्रिफर कर सम पार्ट्स रोची रिलेशन तो सेकंड कंक्लूजन टा आपनकर लॉजिकली प्रूव्ड हो पारु तो आंसर ऑप्शन बी ऑफ करंतु बी इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 65 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा इट्स काउंटिंग द ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर 66 क्वेश्चन रे ट्रायंगल और स्क्वायर काउंटिंग करिया ताल देखो एथरे स्क्वायर काउंटिंग टा फर्स्ट नहीं जाउची कहीं की एटा बेटर हबो स्क्वायर डाली गला हमें ऑप्शन को स्क्वीज करि परिबा ए फिगर रे अपन पाई जे पांचटा कना ये 1 2 3 4 चारटा पाई गले तापर अपन ए फिगर रे पाई जिबे एटा गोटे पांचटा सभा बड़टा गोटे 6टा ताले 6टा स्क्वायर रहइबो 6टा स्क्वायर बेले एठी 6टा स्क्वायर एठी 6टा स्क्वायर ताले आपनकर ऑप्शन ए ऑप्शन सी कटि गला ऑप्शन बी और डी रु गोटे आंसर हबो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपन काउंटिंग करिबा आइदर 26 हबो नले 28 हबो तो सेटा ऊपर आपनकर डिपेंड्स करछि बर्तन आपनकर आंसर तो एटा को सिस्टमैटिकली काउंटिंग कले ए फिगरटा यदि काउंटिंग करेंगे यही टाइप फिगर आप पाइबे 16 एटू 16टा पाईगले तापर आपंकर रहीगला आउटर साइड जहाँ फिगर से 16 पाईगले एटू पाईगले 3टा 16 प्लस 3 19 2टा 2 21 तापर आपंकर कॉमन जोन रे देखंतु केतरा मिलुची कॉमन जोन माने एटा गोटे फिगर होची बड़टे एटू एटा काटिदेले एटा पाइबे 3टा 21 3 आसीगला 24 तापर देखंतु एटू आपण 4टा पाई परचंती गोटे एटा गोटे एठू रे गोटे एठू एठी गोटे एठू गोटे 3टा एटा गोटे 4टा 24 प्लस 4 आ जोची कते 28टा तो आपनकर टोटल 28टा आसी ट्रायंगल्स तो ऑप्शन डी ऑप्ट करंतु इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा 69 कैसे आपंकर गोटे वर्ड एनालॉजी आप जानते तो यदि मीनिंग बुझी पारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व करि परिबे एटा इजी वर्ड रे मध्य देछि सन इज टू लाइट एटा अपन कोटा लिंक्स करि परिबे सन गिव्स अस लाइट सूर्य हमको कौन दिए सूर्य किरण दिए सन गिव्स अस लाइट तो टीचर गिव्स अस व्हाट एजुकेशन ऑप्शन डी ऑप्ट करंतु तो डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 69 चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा It's a Q question. A Q is painted red on all faces and cut into 64 equal smaller cubes. तो 64 smaller cubes first formation कर दूची अपन को बुझिया पे सुविधा हबो तो 64 तीन टा पार्ट रे कट कले अपन 4-4टा पीस लेखा पाई जिवे 16-64 हे जिवो फॉर स्मॉलर क्यूब्स हे गला गोटे थाकर अपन बोचंती 1 2 3 4 16 चारटा थाकर 16-64 इट से आस्क कुछ हमको कोन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव पेंटेड ऑन एग्जैक्टली 2 फेसेस दुईटा फेस पेंटिंग हेतिबो आपनकर कॉर्नर क्यूब रे तीनटा पांती तीनटा फेस एटा आपनकर एज रे क्यूब रा सब आपनकर 2 फेस मिले तो एई एज रे आपन पाउचंती दीटा 2 फेस कलर क्यूब टोटल आपनकर केतरा एज रहउची क्यूब रे 12 एजेस दुईटा एज रे आपन पाइले माने गोटे एज रे आपन दी पाउचंती जोड़िए माने जोड़िए 2 फेस कलर ताले 12टा एज रे केते पाइबे 12 दूने 24 24 टा ही आपन पाइबे 2 फेस कलर क्यूब तो इजी आंसर आपन को आउ अनवर किसी देखिया पे पड़िबो नाही चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा जैसे गला आपनकर सिलोजिज्म क्वेश्चन टे डायग्राम थ्रू ते आपन इजीली को आंसर ड्रा कर नै पाथिबे सम बॉक्सेस आर राउंड बॉक्स नेले राउंड नेले सम रे ऑल राउंड्स आर स्पेयर कर देले इबे असंतु कंक्लूजन को जीवा सम बॉक्सेस आर स्पेयर लॉजिकली करेक्ट
some spares are boxes, some spares are boxes, ये भी logically correct. Some spares are round, some spares are round, ये logically correct. All spares are round, all spares are round हो नहीं sum हो तेणु बहुत कटि जाऊँ. First, second, third तीनोटी conclusion correct हो. So first, second, third correct हेले देखंतु option D रे अछि. First, second, third are correct. Answer option D opt करंतु. D is the answer to question number. That's your 77. So these are these discussions of this reasoning set. Sorry, discussion कर देली. अपन watch करी भला भाବରେ बुझी परिबे. Let me stop here. Thank you.